माइग्रेन, हेडेक, हाइपर एसिडिटी, डाइजेशन का कोई भी इशू है. इनहेल. What are the benefits of kumbhak? Retention, release and relaxed. What are the benefits of kumbhak? Retention, कुछ नहीं, 5-10 साल आपके बढ़ जाएंगे बस, और ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं. सिर्फ 5-10 साल आप बढ़ा सकते हैं कुंभक करने से. जितना ज़्यादा कुंभक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बढ़ जाएगी. बस इतना ही बेनिफिट. अब करना है या नहीं करना है वो आप तय कर लेंगे. बस ब्रेथ ही ये काम कर सकता है और किसी के अंदर ये ताकत नहीं. ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग इन, chin to chest. Exhale. Inhale. Pressing chin to chest. Exhale. Inhale. Chin to chest. Slowly release and relaxed. चिन को चेस्ट से मिलाना. क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्यों करना है? बस कुछ नहीं, जॉइंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. लास्ट डे तक चलते फिरते रहिएगा, बस इतना ही फ़ायदा है चिन से चेस्ट को मिलाने का. क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं मैनेजर. कौन से मैनेजर? थायराइड और पैराथायराइड. एक बार बस गूगल कर लीजिएगा क्या फ़ायदा है. यदि नी की प्रॉब्लम हो रही है, बैक की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इसका मतलब थायराइड जो है वो गड़बड़ हो गया. टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में तब आएगा जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो ये सीखना है. द आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव स्ट्रॉन्ग टिल द लास्ट डे. स्टार्टिंग विथ द बैलेंसिंग प्राणायाम. Closing your right nostril. This time left is inhaling and right is exhaling. Left inhale and right exhale. Left inhale, right exhale. इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को बंद कीजिए और सिर्फ अंगुष्ठा और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे. लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल. लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल. Left inhale, right exhale. Left inhale, right exhale. Left inhale,
right exhale, left inhale, right exhale, left inhale, right exhale, left inhale, right exhale, left inhale, hold. Right exhale, release and relaxed. क्या बेनिफिट है? बीपी के लिए रामबाण है. माइग्रेन, हेडेक, हाइपर एसिडिटी, डाइजेशन का कोई भी इशू है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल एक्सहेल. किसी भी तरीके का चिंता, नींद नहीं आ रही है, आप समझिए बीमारी का घर बन चुका है. यदि नींद नहीं आ रही है तो बीमारी का घर बन चुका है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल नींद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, चंद्रमा को एक्टिवेट करता है. क्लियर? कितनी बार करनी है? कितनी बार करनी चाहिए? जब तक आपका पेट ना भर जाए. कितना खाना खाना है? और जिनको प्राणायाम में मज़ा नहीं आ रहा है, जिनको आनंद नहीं आ रहा है, आप अभी बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो. बहुत योगा में बहुत काम करना है. यदि प्राणायाम में जिस दिन मज़ा आने लगे, आप समझ लीजिए एक स्टेप आप आगे बढ़ गए अपने वेलबींग को लेकर के, और आप एक अलग इंसान बन के खड़े हो जाओगे. राइट नॉस्ट्रिल इनहेल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्सहेल. कम से कम 21 बार तो आपको करना ही चाहिए. क्लोजिंग द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल इनहेल and left nostril exhale. Same process. Close your index finger and middle finger. Right nostril is inhale and left exhale. Right inhale, 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 left exhale.
right inhale, left exhale, right inhale and hold, left exhale,